Okay, yesterday we just talked about energy, and energy means that the ability of our body to do work. Okay? Yes, sir. Its unit is joule. All right, आगे चलते हैं हिंदी और देखते हैं इसमें क्या होता है. We discussed different types of energies yesterday, and we come to know that basically there are two types of energies. One is called potential energy, And kinetic energy. and the other is Kinetic. kinetic. What is potential energy? Gravitational Energy, yeah, gravitational potential energy possessed by body energy stored in a body, right? अब ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी का मतलब क्या होता है? एक बॉडी के अंदर जितनी उसने एनर्जी स्टोर की हुई है तो इसमें जितनी एनर्जी उसके पास है सिंपल. All right, energy stored in a body. इस इसमें पोडियम में कोई एनर्जी स्टोर है? ये पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रही है, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, खैर मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल दूं. आप लोगों की पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती थी? होती है ना कि तो टीचर्स समटाइम्स से जी के बड़ा पोटेंशियल है उस्मान में, बहुत पोटेंशियल है बख्तियार में, खाकान में, खदीजा में, इस्तफा में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये यूज नहीं करता उस पोटेंशियल का. मतलब क्या हुआ इसमें? एबिलिटी है बट यूज नहीं हो रही. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अली भट्ट, कैसे हो बेटा? एबिलिटी है लेकिन यूज नहीं हो रहा. ठीक है. पोटेंशियल का मतलब है इसकी एबिलिटी, पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी. और कल हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी की जितनी टाइप्स थी, यानी जितनी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? पोटेंशियल एनर्जी की. और उन सब में ऑब्जेक्ट्स के पास एनर्जी थी. जैसे केमिकल एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें एनर्जी होती, वो एनर्जी देते हैं. पेट्रोल जब वो बर्न होता है, कंबस्शन होती है, व्हाट हैपेंस? इट गिव्स एनर्जी. दैट इज केमिकल एनर्जी. Coal, when it burns, from where that energy is possessed, that energy is stored in it in the form of potential energy. ठीक हो गया बेटा? अब potential energy पे we have एक और definition है, energy possessed by a body due to its
पोजीशन, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। है ना पोटेंशियल एनर्जी, बट कौन सी टाइप? ग्रेविटेशनल। एनर्जी possessed by a body due to its position। कैसे बना? लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है, बहुत ऊंची सी, इधर एज के ऊपर एक ब्रिक रखी हुई है, बिल्कुल एज के ऊपर इधर। अगर ये यहां से किसी वजह से ब्रिक गिरे, इट विल कवर सम डिस्टेंस, ठीक है, और इस पे फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज गोइंग टू डू वर्क। वर्क क्या होता है? मोबिलिटी, एनर्जी है ना उसमें। तो इस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी है ऊपर जब रखी हुई है? माय क्वेश्चन इज इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी अली, बट फ्रॉम वेयर इट हैज गॉट दिस पोटेंशियल एनर्जी? कहां से आई इसके अंदर, कैसे स्टोर हुई इसके अंदर? और एक और stored and transferred। एक और ब्रिक यहां पर रखी हुई है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? ए में और बी केस में विच पोजेस मोर पोटेंशियल एनर्जी, ब्रिक एट ए और ब्रिक एट बी? दिस इज A sir। ए में पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, और उसकी पोटेंशियल ट्रांसफर ट्रांसफर कहां से ट्रांसफर हुई है? सर। ऑलराइट बख्तियार, व्हाट डू यू थिंक? सर पोजीशन की वजह से। पोजीशन की वजह से। तो यहां पर पहुंची कैसी थी ये ब्रिक? किसी ने रखी, any of the laborers, he put this brick over here or at this point, so the energy possessed by that laborer was transferred, as Alibat is saying, to this brick in the form of gravitational potential energy. Since this brick is at a greater height from the ground, it possesses more energy. Its height is less as compared to it. So it means potential energy, gravitational potential energy has something to do with I. So we denote potential gravitational potential energy or potential energy with BE, and its formula is mg h. Now mass remains constant. G is also constant. Potential energy depends upon the height. This marker placed here has some potential energy. Now, more potential energy. If we just take it to Minar-e-Pakistan, it will have even more potential energy, right? Why? Its mass is same, the value of G is same, but the height is changing. That means potential energy depends upon height. ठीक हो गया बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? All right. So when any of the laborers that place these bricks over here, they transfer their energy to them, which is stored in it in the form of potential energy. Even after 200 years, if this brick is dropped, this brick is going to use that potential energy which was stored in it and will come down. It will do some work because of that energy. Okay? So potential energy depends upon mass, gravity, and height. Since mass and gravity they remain the same constant, so Sir, height causes the एक क्वेश्चन है सर, increase or decrease in energy. इसमें अगर यहाँ पे एक ब्रेक रख भी दिया Yeah. तो
उसको नीचे गिरने के लिए एक फोर्स, कोई फोर्स तो चाहिए होगी ना उसके लिए, कोई हाँ, पोजीशन, ये तो कह रहे हैं ना, एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, स्टोर्ड है ना उसमें, उस पुश से वो क्या करेगा, उस एनर्जी को यूज करेगा, बिफोर यूजिंग इट इज पोजेसिंग दैट, उसके अंदर रखी हुई है ना, स्टोर्ड है उसके अंदर। ऑलराइट, ओके, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? दिस इज डिनोटेड बाय पी, ई कल हमने बात की थी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय के ई। व्हाट डू यू थिंक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का क्या मतलब होगा? पार्टिकल, ऑलराइट, पार्टिकल से रिलेटेड, Associated with movement. जी उस्मान एंड खदीजा, फातिमा, काइनेटिक, काइनेमेटिक्स, मूवमेंट, मोशन, शाबाश, एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. K E is equals to half M V square. काइनेटिक एनर्जी को तो गौर से देखो, हाफ कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज हाफ ही रहेगी, चाहे हमारे पे चले जाए, मास m कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी, राइट? We have just talked about the two energies, potential energy, kinetic energy. All right? बेटा यहाँ तक कोई सवाल? This is due to the position, this is due to the motion. फॉर्मूला क्लियर है दोनों का? भाई पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? People online, what will be the unit for potential energy? शाबाश, जाओ, अलीवर्ट, वेरी गुड जी। बख्तियार एंड फातिमा, उस्मान एंड खदीजा, यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी? सिग्नल स्वीप हो गया, माइक्रोफोन खराब हो गया बख्तियार का, तो जाओ, गुड, दोनों का जाओ, ओके, बिकॉज एनर्जीज है, ठीक है, गुड, शाबाश। कोई सवाल यहां तक? नो क्वेश्चन? ऑलराइट, माय क्वेश्चन, let's suppose a ball is placed at a height. This height from the ground is 20 meters and it is held like this. ये बॉल है, ऐसे रखी हुई। What is the kinetic energy of this ball? It is at rest, it is not moving. 0. Kinetic energy is 0. Very good. Why 0? No movement. No movement. No moment, movement, no velocity. बिल्कुल ठीक है, शाबाश, excellent. तो movement होएगी तो kinetic energy होएगी. Let's suppose this is 0 height. This level is called 0 height. Ground level है ना? When the ball will reach at this point, what do you expect? Potential energy क्या होगी? Potential energy
minimum. फिर हाइट 0 है, हाइट इज 0 तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। एस्टेब्लिश है ये बात। ऑलराइट, अब केस देखो, ये बॉल यहाँ पे हमने ड्रॉप किया, बल्कि ड्रॉप भी नहीं किया, रुका हुआ यहाँ पे इसमें कोई एनर्जी है? डू यू थिंक इट पोजेस नी एनर्जी एट नॉट हाइट पर मास भी और ग्रेविटी भी काम कर रही है। Gravitational potential energy. ऑलराइट, और लेट्स सपोज इट्स मास of this ball is 2 kilograms. Can you determine what is the potential energy of this ball if we are using the value of G? अब से हम G क्या यूज करेंगे? 9.81। हम इसको पहले 10 यूज करते थे ना, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द एग्जैक्ट वैल्यूज, यही आपने एग्जाम में यूज कर रही है। 9.81 जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 392.4। बख्तियार एंड फातिमा, यू पीपल आर वेरी क्वाइट, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। चल भाई फातिमा बता फिर इसकी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? कैन यू कैलकुलेट दैट इफ यू नो द मास, वैल्यू ऑफ जी एंड हाइट? We know that potential energy is equals to mgh. So P E की वैल्यूज कितने जाउल्स निकली? 392। Sir, 400. 392.4। 392.4। G की वैल्यू हमने ये यूज करनी है बेटा सबने। T 92.4। Right? When the ball is about to touch the ground, what will be the kinetic energy of the ball? Zero, sir. वेलोसिटी क्या है? We don't know the velocity. Sir, gravitational potential energy होगी। के इक्वलेंट ही होगी। यहाँ पे कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी? इस हाइट पे 0। ये पोटेंशियल एनर्जी ये है ना, आपने कैलकुलेट की, वो तो काइनेटिक एनर्जी थी। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू कितनी हो जाएगी? 392। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? मैक्सिमम। तो यहाँ से ये सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। So can we deduce that energies, they are interchangeable? We can? सर ये बेटा सर पास्ट पेपर में अक्सर जगह पे जो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज हुई है, तो हम 10 यूज करें या 9.81? ये यूज करें। कैम्ब्रिज ने अब चेंज कर दी है, अब से आप 9.81 यूज करें। दिस इज द रिसेंट चेंज। ऑलराइट, ओके सर। अभी चेंज इसलिए क्या है, पहले हम सब लोग 10 यूज करते थे, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है दैट इज 9.81। ए लेवल्स में भी आप 9.81 यूज करते आ रहे हैं बहुत अरसे से, और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, ओ लेवल्स के बच्चों को जरा से कैलकुलेशन में वो कंपनसेट करने के लिए इजी चीजें उन्होंने रखी हुई थी, इसको 10 किया होता, राउंड ऑफ किया होता, तो अब उन्होंने वो खत्म कर दिया। यू हैव टू यूज इट 9.8। पास पेपर्स में सब में 10 ही है, बट अब से हम इसको 9.81 यूज करें। ऑलराइट, क्लियर हो गया बेटा? 10 ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब एनर्जीज इंटरचेंजेबल। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने यहां से एक बॉल को फेंका ऊपर, दिस इज ग्राउंड, यू आर प्लेइंग हियर एंड यू जस्ट थ्रो अ बॉल अप,
It reached its maximum height. यहाँ पे ये रुक गया है. तो जब आपने इसको ऊपर फेंका तो your hand, it provided that energy which is stored in it. ठीक है? And that energy is used by the ball to gain the height. So this speed is gradually reducing. The velocity of the ball is decreasing as its height is increasing. So when velocity is decreasing, that means Kinetic to potential, yes, gravitational. mv square. The kinetic energy is being converted into potential energy, which is mgh. ऐसे ही है ना इस दफा Yes, sir. खदीजा एंड उस्मान ऐसे ही है ना बेटा. तो अब बॉल ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे इट विल जस्ट बिकम स्टेशनरी फॉर अ सेकंड एंड देन इट विल कम डाउन. ये चलना शुरू हो जाएगी. नाउ it reached at the maximum height, it has got maximum potential energy. Now it is using its potential energy again to gain velocity. So it is converting potential energy into kinetic. And at this point, it will have the minimum potential energy, but all of that potential energy is converted into kinetic energy. It means the total energy, kinetic energy and potential energy का sum P/E plus K/E remains constant. At every point, total energy of the ball remains constant. So there is a law of conservation of energy. What is that? I'm just writing it here. Law of conservation of energy. That is, Energy cannot be created, nor Yeah. destroyed. But although it can change its form. Energy can neither be created or do you spell neither? Neither be created nor destroyed. Although it can change its यहाँ पे क्या होगा? फॉर्म भी तो चेंज हो रही थी काइनेटिक से पोटेंशियल एंड अगेन फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक. So that is actually the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed, although it can change its form. Total energy of any system remains constant. लिखोगे? We are just going to do a few questions on it. A ball thrown vertically upward. ये ऊपर जा रही है ball और with a velocity of 30 meters per second. Find सर थोड़ा वैल्यूज बड़ी लिखते हैं.
इतनी बड़ी कॉपी है? जी सर वो नीचे वाली भी चेंज करना। ये थर्ड, अच्छा ये वाली, ओके। V is equals to 30, ब्लैक से लिखता हूँ ताकि अली को नजर आ जाए, सबको नजर आ जाए। V is equals to 30 meters per second. Now what you have to find number one, kinetic energy of the ball. चलो जल्दी से कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी। mass जो है इसका its mass is 3 kg। मैं तो mass के लिए ठीक है। कितना है? 1300, बल्कि लेट्स लिखते हैं 1350, 1350 सबका यही आ रहा है 1350 जाओ। यस सर। Number 2, find potential energy at the highest point. Highest point. Potential energy कितनी होगी highest point? How much? 1350। थकान क्यों? तो इसका आंसर यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। ऑल राइट, गुड, एक्सेलेंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इस बॉल रुक जाएगी। फाइंड थर्ड पॉइंट। गुड है, 1350 गुड। फाइंड द हाइट मैक्स हाइट find the maximum height gained by the ball. Then 45.9 meters. So H is equals to 40.9। ऐसे ही ये आंसर हैं जिनको मैंने बॉक्स में बंद कर दिए ताकि वो आराम मुश्किल है ये काम? इजी या वेरी इजी? जी बेटा, people who have just joined us, किधर गए? हम लोग मैच देख रहे थे, मूसा एंड हैदर। चलो कोई बात नहीं। We have just talked about energy, और एनर्जी में हमने टॉक की है about potential energy and kinetic energy. Kinetic energy is due to motion, movement. Ke is equals to kinetic energy is equals to half mv square. mass क्या होता है? कांस्टेंट। 1/2 की वैल्यू कांस्टेंट, तो किस चीज पे कांस्टेंट डिपेंड करेगी? इसी तरह से we have Pe is equals to mgh,
मास ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट रहते हैं, जी की वैल्यू 9.81 कांस्टेंट रहेगी, तो किस पे डिपेंड करेगी? हाइट। ठीक है, एक बॉल आपने यहां से फेंकी, ऊपर गई, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी यहां पर थी, उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या हो जाती है? जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है एक लम्हे के लिए, एंड देन इट ट्रैवल्स बैक। तो एट दैट मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जो इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड पे थी, और इस हाइट पे व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? So that means energies are interchangeable, interconvertible. That is law of conservation of energy. What is that? Energy can neither be created nor destroyed, although it can change its form. ये हमने क्वेश्चन किया, एक बच्चा था, उसने ये बॉल फेंकी है ऊपर, बॉल का mass was given to you, initial velocity was given to you. Velocity was 30 meters, mass is 3 kilograms. ये क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड ये किया हमने, ये फाइंड किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, यहां पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल मैक्सिमम हाइट पे, एंड वी हैव डिटरमिन्ड द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द बॉल। ऑलराइट सर, जी बेटा। सर जो हाइट निकाली है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी वाले में से ही निकाली। बेटा हाइट का फॉर्मूला, हाइट किसमें है? इन दोनों फॉर्मूलों में से किसमें हाइट है? पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही लगेगा टू डिटरमिन द हाइट। ठीक है, शाबाश। एनी अदर क्वेश्चन या आगे चले हम? और आगे चलते हैं। ओके, मैं I'm just rubbing this side so that I can use it. मुझे ये बताए कि जो बर्ड होते हैं वो कितनी हाइट पे फ्लाई करते हैं? मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, कितने मीटर? हाँ सर ये इसने हाइट गलत निकाली है। जी बेटा, हाइट गलत निकाली है, 10 उसने ली है, क्या कहते हैं वैल्यू, जी की वैल्यू 10 ली हुई है। जी की वैल्यू बेटा हमने 9.81 लेनी है। सर फिर दूसरा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ? 15.29 आ रहा है अगर मैं 9.81 लूंगा तो। दोबारा से चेक करो भाई, ट्रिपल सेट के नहीं आएगा ये, आज करके देखते हैं। आंसर आया, वही आंसर आ रहा है। कितना? 45.9 ही आ रहा है मीटर्स। mgh फॉर्मूला क्या है हाइट के लिए? mgh, we know potential energy, that was how much? 1350। ये निकाल लीजिए आपने, 1350। मास कितना था? 3 kg। g की वैल्यू 9.81 into height। 3 and 9.81 when came on this side, they are dividing this 1350 divided by 3 into 9.81। ठीक है अली? सही है सर। ओके, गुड अली, यू आर डूइंग इट। अच्छा जी, एक बर्ड मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कर सकता है जमीन से? डिपेंड करता है उसके विंग्स पर, पोटेंशियल पर। पोटेंशियल विंग्स बड़े पावरफुल है, कितना ऊपर चला गया? यस सर, मास कितना अंदाजन? ये जो बिल्डिंग है ना हमारी, ये को 15 मीटर है, 3 स्टोरीज है। 100 मीटर तक तो जा सकता हो। 100 मीटर तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो यहाँ तक आ जाएगा। और 300 मीटर्स, चलो हम 350 मीटर्स कर लेते हैं। ठीक है,
नहीं बेटा, इससे ज्यादा उठेगा, इससे ज्यादा उठेगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी है। ऑलराइट, 350 मीटर्स। अच्छा, कैलकुलेशन तुम्हारी आसान हो जाएगी, कितना बड़ा फ्रॉड है यार। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, ये तो हो गई हाइट। ये बताएं, एक बर्ड अपने क्लॉज में कितना कितना मैस ग्रैब करके ऊपर जा सकता है? 5 kg? यस। नहीं 5 kg का पता है तुझे कितना होता है? सर, अगर चीज वो जो दूसरे कौन सा वाला? आर्टिफिशियल बर्ड नहीं, नॉर्मल बर्ड है, चील कर लो या और कोई इस तरह का, ठीक है? सर 2 kg, 2 kg भी ज्यादा है। 0.5 kg। 0.5 kg, चलो इतना कर लेते हैं। 0.5 kg भी वैसे ज्यादा है, तुम लोग इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं कर लेता हूँ। नहीं, 0.5 नहीं है, 0.25 है। सर इतनी छोटी वैल्यूज। 0.25 किलोग्राम मैथ आ गया हार्ड। लो जी, ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये उसने पेबल पकड़ा हुआ है जिसका मैथ ये है। मुझे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे? टीई। यहां पर पेबल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर 858 858 पॉइंट 4 जूल। सबका याद है बेटा? दिस इज इंपॉर्टेंट, सब लोग करो बेटा मेरे साथ, वैसे समझ नहीं आएगा। So there is a bird which is holding a pebble weighing 0.25 kilograms in its claws at a height of 350 meters, right? लो जी, ग्राउंड पे यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी? सेम। टच होने से जरा पहले, जरा सा पहले, ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। 858.4 joules. Can you find out the final velocity? Near the ground. Final velocity of the pebble if it is dropped by the bird. Calculate करो ना, G की वैल्यू कितनी लेनी है हमने? G is equals to 9.81 meters per second square. सब लोग कैलकुलेट करो बेटा। मूसा, हादिया, tell me what is the velocity? फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ke is equals to half mv square. You know the kinetic energy 858.4. We are going to use the value here. You know the mass. In सबको simplify करके tell me what is the velocity. 82.87. Somebody told me that it is 82.87 meters per second. 82.8 meters per second. पता है कितनी स्पीड है ये? 100 मीटर और लगती है ना रेस ओलंपिक्स में, तो जो बोल्टन भागा, जॉन बोल्ट, वो 1 सेकंड में कवर करते हैं, जस्ट इन अ सेकंड। बुलेट की स्पीड है। अगर ये if it is coming with this velocity जो आपने मुझे बताई है, मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर जी असल में भी जी असल में भी यही है, ये असल में है। हाँ, एंड यू नो ये सारा पूरा इंसिडेंट पूरा फील्ड में गिवन है।
You remember? इस्लाम में आपने आजकल पढ़ रहे होगी बल्कि आप सर इब्राहा या दे दिया ना पेपर जो इब्राहा वाली पूरा इंसिडेंट कोट हुआ सीधा टीम में. He came with elephants to destroy Kaaba. So what happened? Birds. They holding those pebbles in their claws. और वो हाइट पे जाती जब अल्लाह ने उससे कहा होगा कि हाइट गेन करो तो 350 से बहुत ऊपर चले गए होंगे. और जब वहां से उन्होंने पेबल्स छोड़े तो किस स्पीड से आया? दिस इज द स्पीड ऑफ अ बुलेट. उससे भी तेज. जब वो एलिफेंट्स को लगे होंगे पेबल्स कैसे लगे होंगे? गोलियों की तरह. इट इज फिजिक्स अराउंड अस. फिजिक्स. सूरह की कैसे हो गए थे वो एलिफेंट्स? कैसा कर दिया दोनों एलिफेंट्स को? जैसे खाया हुआ भूसा होता है. खाया हुआ भूसे का मतलब ये है कि वी कैन नॉट फिगर आउट कि इनमें से लीव कौन सा है और स्टेम कौन सा है भूसे का. ठीक है, ऐसा हो गया. कोई नोबडी कुड रिकॉग्नाइज कि ये एलिफेंट की ट्रंक है या टेल है या लेग्स है या क्या. कीमा बन गया इन पेबल्स के साथ. सो दिस इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट. So what we did today, we just discussed kinetic and potential energies. We come to know what is the formula of that. Then we discussed the law of conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed. The energy of a system remains constant. And then we did these two problems in which we determined the velocity and height of different objects when some data was provided to us. Easy है बेटा ये? Yes. हाँ यहाँ पे काफी easy, आगे भी easy. So आप लोग practice करो with the help of topic book. ठीक है? Tomorrow we are going to do the last bit of this chapter, which is power. ठीक है? Any questions? कोई चीज पूछनी हो बेटा आपने? कुछ नहीं पूछना? No, sir. All right, we are done with this class, today's class. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz beta. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz beta.